Yes, good morning everyone. Sorry for delay. Yes, yes, good morning. So, have you all revised the previous concept? Yes, Anvita, Kriti, Samriddhi, Ramani, Shobit, Jia is there, Shrishti, Anushka, yes, Ronan, Arya, Ragini, Arav, Pratik. Good morning to all of you. Sarvjot is there, Ashmita, yes, Anvita. Yes, welcome you all. So, Anidhi. Okay, now my question is, have you revised the concept of operation on real numbers? Yes, Akhil, Harsh, good morning, all of you. Are you clear with especially the operation on irrational numbers? Yes, everyone, welcome to the class. Okay, so here, before going ahead with the class, the main topic of today is multiplication of irrationals. Okay, we'll be discussing in detail that multiplication of irrational numbers. It's one of the most important concept here. In book also you will be saying further on this. There's nothing much on addition subtraction, but what the sums I have given you, please try to search those kind of questions for the practice if you need it. I'll be giving you further practice assignment also. But right now let us focus on multiplication. In the previous worksheet, I gave you the practice of single number, this kind of question you practice. 3 root 3 multiplied by root 3. So what's the answer here? Okay. So root 3 and root 3 is multiplied becomes 3 and 3 into 3 gives you 9. Okay, so we multiplied with a single digit here. Yes, Vivek, welcome to the class. Okay, now, and if you remember the last question, I hope you were able to solve the last worksheet, and especially this kind of questions. Okay, I didn't get any doubts, so I assume that you all solved it and you understood the concept. If any doubts are there, please ask it in the groups. In the group we can discuss the doubts. So let me know if any. Otherwise, I'm moving on to this. Okay. So 3 root 3 into root 3 is 9. Okay. Now, if it is, now it's a single term. Okay. So that means when you have the number 3 root 3, okay, and you got the answer as rational number. Okay. So I could ask you something like this. Multiply by something, so you get a rational number here. Okay, your answer has to be a rational number. So what could be the number we could multiply? So our focus today's class will be on this, that what should be the number we multiply to give an irrational number so that it will give us the product as a rational number. Is that clear to you? So today's class, I'm beginning with one simple question. Okay, now let us multiply 2 plus root 3 into 2 minus root 3. Come on, everyone. I want you to start solving it in the rough and get me the answers quickly. The second one is and the third one is come on.
So I expect you to try this. So please continue to work. I just want the roughly answers, like right now we will not focus on the method. So I want the answers from you. I've given you 3 questions, so please mention the answer number you're writing. You can use the identities if it is possible. Last year you have learned 3 identities: a plus b the whole square, then a minus b the whole square, then a plus b into a minus b. Okay, let's begin. Some of you, I have started giving the correct answer. Let's check. Okay, so now look at it. It is nothing but something with a plus b into a minus b form. So we know that the formula is a square minus b square. Yes. I hope still you're trying it. Okay, you stop it and just pay attention here. So now it is nothing but a square minus b square. So we get this as 4 minus 3 and 1. So I think some of you got this answer as 1. If you see here, it is nothing but a plus b the whole square. So that is nothing but a square plus 2ab into b square. So which we get it as 3 plus 2 root 6 plus 2. And we get 2 rationals, so it is 5 plus 2 root 6. Here, simply opening the bracket, so 2 root 2 multiplied by 2 root 3 plus root 7. Root 7 multiplied by 2 root 3 plus root 7. So 2 2s are 4 root 6 plus 2 root 14 root 21 plus 7. Okay, could you solve this further? Yes, Savi. Good morning. Please get connected to the class. I hope you're clear with the last question. When I open the bracket and I multiply it, we get all different terms here. 4 root 6 plus 2 root 15 plus 2 root 21 plus 7. Since all the terms are different, we leave the sum here only. Yeah, please stop solving it and pay attention here, everyone. Okay, so are you clear with the first one? Okay, now if you see the left hand side here, please listen to my statement. The left hand side is the, you can say that all are irrational numbers. I could say that multiplication of irrational numbers on the left hand side. That is, both the numbers present on left hand sides are irrational numbers. Okay, and what will you conclude about the right hand side of all 3 sums? What is the, in case 1, what is your right hand side? When you multiply 2 irrational numbers here, what is your right hand side here? Okay, what is it? It is irrational number. Whereas here you got 2 irrational numbers and you multiply them, you get the same answer. Irrational number 5 plus 2 root 6, which is irrational. Okay, and then similarly here we get irrational numbers. So that means you can conclude it. I think there was some confusion to the student that what is the product of irrational number? So that the product of irrational numbers may be irrational or rational. Is that clear to all of you? So you will further practice on the sums. Very simple questions are there. What I'm trying to tell you here is the one confusion which you have to focus on. See, multiplication is not so difficult here. Only thing is you have to pay attention with the root sign. Don't forget the roots, please. ऐसा ना हो कि आप root भूल जाओ
या तो फिर रैशनल बन रहा है उसको इरेशनल में ही रखो. सो बी be perfect in that. Miss Aditya, please connect it yourself. We are dealing here with the multiplication of irrational number. Please look at the screen. Quickly go through it. So two irrational numbers are multiplied here. We get answer as a rational number. Here, the square of two irrational number, the square of irrational number which gives you the answer as irrational number. And here, two different rational numbers are multiplied. We get the answer here also as an irrational number. I hope it is clear to you. Okay, ahead. Okay, now when we deal with such these numbers, okay, you have to pay attention now and focusing on from last session and what I did just now. Try to generalize the thing. By which number you multiply root 2 so that you get answer as a rational number. I'm expecting some answers from you, so please pay attention. Okay, root 2 multiply by what so that you get rational number here. The smallest one. Okay, I know there could be many bigger numbers, but I'm searching for the smallest irrational number you multiply so that you get the nearest rational number. The smallest one you will apply. तो रूट टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें रैशनल नंबर मिले. यस, वेरी गुड एवरीवन. रूट टू. यस, तो रूट टू को हम रूट टू से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? 2. वेरी गुड चिल्ड्रन. Similarly here, what should we multiply to root 5 to get the answer as a rational number? I hope this is the same, like you are answering me for question 1. My question is, what should I multiply to root 5 to get the rational number? Yes, very true. I get it with root 5. I get it as 5. Okay. Now my question is, what should we multiply to 2 root 5 so that I get the rational number here? My third question, what should we multiply with root? So please mention it. Let's take it as A, B and C. So C का answer क्या होगा? I'm searching for the answer. Like I'm expecting you to answer for question 3. I mean C. Are you answering me for C? Then please mention it. What would be the term here so that we get it as a rational number? And mind it, it has to be the smallest one. Okay, I've got few answers here. Nidhi saying root 5. Harsh is saying 2 root 5. Then somebody with root 5, 2 root 5. Okay, so I've got the two options. I have to select it from root 5 and 2 root 5. Let me check that. Now, root 5, okay, 2 root 5 into 2 root 5. Actually, it is 4 into 5, that is 20. Okay, and 2 root 5 into root 5 will give you 2 into 5, that is 10. Okay, so both are correct. Okay, but the one, which one I should select? So I told you the smallest one. So our selection is this. That is our answer is root 5. I hope it's clear to everyone. Are you getting the concept, children? There are some children, I think the strength is 32 right now. There are near about 10 students who have joined recently. Are you getting this concept, children? Oh, yes means shall I assume it is yes for everyone? Okay, fine. So I'll move ahead. So I'll make it a little more complex now. Pay attention, please. I have given you a few examples to solve it before. Okay, and few more. So using that concept, there is root 2 plus 1. What should I multiply here to get a rational number over here? थोड़ा सा अपना पहले के एग्जांपल्स जो भी हम मुझे यहाँ पे रैशनल नंबर चाहिए.
तो मुझे यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा so that I get the rational number? Yes, good. Aditya. Okay, let's check. Okay, now look at this one. Root 2 plus 1 multiplied by root 2 minus 1. So if you could see, this is nothing but a plus b into a minus b. This is the concept I wanted you to learn, children. So please pay attention. Okay, it's okay. Stop typing, stop commenting, and pay attention here. Look at this. Something with a plus b, and you multiply the same term but with the opposite sign. That is root 2 plus 1, root 2 minus 1. So this is a plus b into a minus b form. And what you get a plus b into a minus b form is a square minus b square. So it is root 2 square minus 1 square. So 2 minus 1, that is 1. That means to get here as a rational number, I have to multiply here with root 2 minus 1. Okay? Some more examples. What is the answer? Quickly. Quick answers, please. Okay, I got some answers. Fine. So it is nothing but I'm doing it directly. A square minus b square form. So 5. Root 5 का square 5 है ना कि 25. ये याद रखना है. And then 2 is a rational number here. So 2 का square is nothing but 4. So answer is 1. Similarly, root 7 का square, that is 7 minus 3. So we get this as 4. So did you observe? Yes, somebody wrote 7. I think something is wrong because I think you must have changed the signs. Please remember we are using the formula here. A plus b into a minus b as a square minus b square. This is the basic formula you're going to remember. So now, how to generalize this? Okay, so ऐसा number कौन सा है? If I say a plus root b, या तो suppose root a plus root b is any irrational number, then what is the number on which we multiply this to get a rational number? So you could say this in generalized form. It is root a minus root b. Okay, you will always get a rational number here. Did you get the generalization, children? Okay, I hope it's clear to everyone. I think you're taking time for calculation part. Please stop it and pay attention. So in general, when you are given with a rational number, and you want to make it a rational number, you have to multiply by same number but with opposite sign for a binomial. I'm talking about binomial. You can see this, there are two terms. Okay, so I can say that it's kind of binomial. We don't call it as actually binomial. That is a your algebraic expression term. But that means that if there are two terms here, okay, then you have to use the opposite sign joining them, which will give you the other number, and multiplying them to we get our answer as a rational number. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? Okay, we call it as a rationalization. Okay, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? Rationalization. मतलब जहाँ पे हम irrational number हमें दिया हुआ है, तो हम उसको rational में convert करेंगे. Okay, so did you understand this process? This is called rationalization. और ये जो number है, ये नंबर एक दूसरे के, जैसे कि हमने कनेक्शन किया हुआ है, जैसे रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट सीखा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखा है आपने, आपने ऑपोजिट सीखे हैं, तो उसी तरीके से ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड वी कॉल दैट एज अ कॉन्जुगेट. समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या है? वी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. इसको हम क्या कहेंगे? वी आर कॉन्जुगेट. सो इफ आई से 2 plus root 3, okay, is a number, then what is its conjugate? So a conjugate, या तो ये किसका conjugate है? Is a conjugate of
2 minus 2 3 मतलब कि एक दूसरे के conjugate होंगे. I hope this is clear to all of you. Okay. And using this concept, you have 2 marks, 3 marks, and 4 marks question in your book, which comes in the exam. The most important concept for you. Child, my neck is quite clear, and I think it is visible because I keep it on. And I don't know, it's quite clear. Okay. Yeah. Sorry, children. So can I go ahead with it? Chandra ji has some problem with your net because from my side it's quite clear and it's showing in my mobile also. So it's very clear. So please just you can clear it off with your net issues. Okay. I hope this is clear to everyone. Okay. तो इसके related जो questions है वो minimum 2 marks के आते हैं. Okay. So we are dealing here. No. वी हैव टू बिकॉज ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा निधि यही मैं बता रही थी. ये क्वेश्चन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा, वो आपको ऐसे डायरेक्ट कॉन्जुगेट नहीं पूछेगा. बेसिकली ये क्वेश्चंस अलग फॉर्म में आते हैं जहां आप जीरो नहीं यूज कर सकते हैं. सो विल बी डीलिंग विद दैट क्वेश्चन. मैं उसी पे आ रही हूँ. So are you getting the concept of conjugate everyone? I hope it is clear. Please revise this if it is not clear to you because this is one of the very important concept of this chapter. एंड जहां पे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो प्लीज नाउ आई एम गोइंग फॉर द एक्चुअल क्वेश्चन जहां पे ये यूज होता है. ओके. ये इसकी एप्लीकेशन आगे यूज होती है. नोबडी विल आस्क यू टू फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर. मे बी वो एमसीक्यू में पूछ लिया तो बट जनरली ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको यूज करना है हमें दूसरे कॉन्सेप्ट में. तो वो किस तरीके से यूज करना है वो हम देखेंगे. So the question comes as rationalize the denominator. I hope now your doubt is clear. क्योंकि ये डिनोमिनेटर में होगा तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके. सो प्लीज नाउ लुक एट इट हाउ टू डील विद दिस सम्स. सो जो भी मैंने आपको सिखाया मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स में वही यहाँ पे फॉलो होगा. सो इट्स लाइक द क्वेश्चन इज गिवन एज say 1/√2. ओके. तो यहाँ पे हमें √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर जो हमें पता है कि √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है तो √2 itself. और जब आपके पास रैशनल नंबर दिया हुआ है so your olden concept of like I connected with fraction. आप कैसे करते हो? You multiply and divide by the same number, isn't it? तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे. So we multiply and divide by the same number. So 1 into √2 is √2 upon 2 upon √2 into √2 we get it as 2. I hope it is clear to everyone. A very simple concept. समझ में आ रहा है? Yes, everyone. So actually, we are going to use the concept of rationalizing denominator. I mean rationalization in this kind of question. और इसीलिए हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. And I have taught you how to find out the rationalizing factor. I hope it's clear. So could you try? This is for you. So please try. So by what will we multiply? Come on, try. मेरा क्वेश्चन है पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू हैव टू आंसर मी फॉर दैट. यस. माय क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन में आई मीन द सेकंड पार्ट में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. वेरी गुड. यस वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्योंकि हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है. हमारा फोकस न्यूमरेटर यहाँ नहीं रहेगा तो हमें रैशनल नंबर बनाने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है. So it is nothing but √15 upon 3. Very good. What about the next one? What will I multiply here? Yes, you all are correct.
Okay, what about the next question? No, Harsh. What did I tell you just now? हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था इस टाइप का. Yes, very correct. We have to go with irrational number only. टू तो ऑलरेडी रैशनल है, तो उसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा आंसर होगा रूट 7 अपॉन 2 into 7, यानी कि रूट 7 अपॉन 40. करेक्ट. I hope it's clear to everyone. It's not 2 root 7 because 2 already rational number है. हमारा क्वेश्चन क्या है? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो ऐसा नहीं है कि जो भी डिनोमिनेटर है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब वो रैशनल नंबर है 2 root 7 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 7, जहाँ पे 2 ऑलरेडी रैशनल है, तो हम सिर्फ रूट 7 को रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे. तो उसके लिए हमें सिर्फ रूट 7 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि 2 root 7 से. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन चिल्ड्रन. Yes, Harsh, I think your doubt is cleared. Who is this? Savitri Dahiya. Savitri Dahiya. Who is that student? I hope it is clear to you now. Is that clear, children? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जब रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट होगा तो आप रैशनल को कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, थैंक यू. सो नाउ जस्ट लेट्स गो अहेड विद वन मोर क्वेश्चन. इट इज रूट 5 माइनस रूट 3. अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? सो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या था? व्हेन समथिंग विद a प्लस b, तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस b, और यदि a माइनस b है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a प्लस b. तो हमें इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या लिखना है? एनीवन? So multiply here with the same number with the opposite sign, that is root 5 plus root 3 upon root 5 plus root 3. So on multiplication we get this root 5 plus root 3 upon a plus b into a minus b, so the a square minus b square, which is nothing but root 5 plus root 3 upon 2. Yes, correct. I hope it's clear to everyone. Okay, so this is the concept where actual rationalization of denominator takes place. So I hope this is clear to all of you. सबको ये समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है यहाँ पे? ओके, बिकॉज यही क्वेश्चन है जिसको अलग अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूछा जाता है. ओके, इफ वी गो ऑन सॉल्विंग द सम्स तो यहाँ पे मतलब घंटों भी कम पड़ जाएंगे. So basically you have to understand the concept and you have to practice a lot for this questions. आदित्य, क्या प्रॉब्लम है बेटा? आपने नो कहा है. मेरा क्वेश्चन काफी समझ में आया या नहीं आया? तो मैं नो की क्या नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसके बेस पे स्पेशल एक असाइनमेंट पूरा बनेगा. ओके ओके आदित्य, नो डाउट, फाइन, नो इश्यूज. ओके, तो अब आपका काम ज्यादा है, बिकॉज ये जो मेथड है इसके बेस पे यू कुड सी, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक आप ओपन करेंगे तो यू कुड सी देयर आर मेनी 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 सम्स ऑन दिस. ओके, इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता रहता है. आई विल बी डीलिंग विथ वन क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम्स में आता है. एक कॉमन क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, दैट आई विल गिव यू एज होमवर्क, क्योंकि जहाँ पे मतलब 2-4 इसी फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई फर्दर. ठीक है, मैं यहाँ पे एक दूसरे के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ले रही हूँ जिसमें ये यूज करना है. और बेसिकली एक चीज याद रखिए, इसके साथ आपकी इस चैप्टर के साथ मतलब इस पार्ट के साथ रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में आपका सबसे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको कनेक्ट करना है, दैट इज आइडेंटिटीज. ओके, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर मैंने रिपीटेडली कहा है कि आइडेंटिटीज आर योर बेस. ओके, तो यहाँ आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर भूल गए या a माइनस बी का होल स्क्वायर में कंफ्यूज हो, या a प्लस बी इंटू a माइनस बी को आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते चल रहे हो, तो ये नहीं चलेगा. सो यू शुड रिमेंबर ऑल थ्री आइडेंटिटीज वेरी वेल. फाइन. तो आई थिंक फर्स्ट टू प्रैक्टिस दिस, जो अलग टाइप का एक क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, एंड देन वी टेक अ डे ऑफ अगेन एंड आई गिव यू क्वेश्चंस. तो आज का होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बिकॉज दिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जो अभी मैं लेने जा रही हूँ इट्स अ रियली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है. ओके, और आपके आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है. सो वी विल डू दैट क्वेश्चन.
क्वेश्चन सेज ओके, अब आपने क्वेश्चन देखा है तो आप कहोगे मैम इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा मेथड पे ध्यान देना। जनरली आप लोग क्या करते हो, जैसे मैंने कहा कि मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स करना है, तो आप क्या करोगे, इसको x लिया, फिर वन अपॉन एक्स लिया और इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट यहाँ पे थोड़ा सा मेथड पे फोकस करना है, हाउ इट इज टू बी डन। सो प्लीज 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 लुक एट दिस and please try to follow this what I'm saying just now. Okay, now if x is root 3 plus root 2, so what is 1 upon x? नहीं, इतना जल्दी नहीं दौड़ना है हमें 1 upon x के लिए. Can I simplify this further? Okay, see what I'm doing is I will simplify this further. कैसे? So by rationalizing the denominator जो हमने अभी अभी सीखा है. So x is equal to 1 upon root 3 plus root 2. तो इसका मतलब ये हुआ देखो 1 upon x root 3 plus root 2. ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई, दो अलग अलग चीजें हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, दो पार्ट जान लो. यहाँ पे मैं x को सिंप्लीफाई करूंगी और यहाँ मैंने उसका रेसिप्रोकल निकाल के रख दिया. ठीक है, ये दो चीजें हैं. तो अब x को मैं यहाँ पे रैशनलाइज करूंगी, तो इट इज 1 upon root 3 plus root 2 multiplied by root 3 minus root 2. So therefore x is equal to root 3 minus root 2 upon 3 minus 2, that is 1. तो हमारा x यहाँ क्या बन गया, root 3 minus 2. Did you understand this? अब x बन गया सिंपल. तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड x plus 1 upon x. तो x plus 1 upon x क्या होगा, तो x हमारा है root 3 minus root 2 plus root 3 plus root 2. Did you understand all of this? इसमें एक ही चीज याद रखनी है आपको, या तो x रेसिप्रोकल में जब हम दो नंबर्स की बात करें, मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जब हम नंबर की बात कर रहे हैं तो एक यदि मैंने सिंपल फॉर्म में दिया है तो दूसरा आपको अपॉन में मिलेगा, यानी 1 अपॉन समथिंग मिलेगा. ओके, तो आपको क्या करना है, जो 1 अपॉन समथिंग में आ रहा है या तो x या तो 1 अपॉन x, दो में से एक जरूर आएगा, तो उसको आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है और उसके बाद आगे के जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं. I hope I'm clear to all of you. Yes, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रही हूँ, ये आपका चैप्टर 1 का, सो प्लीज पे अटेंशन. इसके बाद सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हमारा बचता है, द चैप्टर गेट्स ओवर. बट यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. समझ में आ रहा है इतना सा पार्ट. मैंने यहाँ पे क्या कहा, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया होता that x is equal to root 3 plus root 2, तो आपका 1 upon x क्या हो जाता, 1 upon root 3 plus root 2. तो आपको यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना पड़ता है. समझ में आ रहा है, मतलब कि कोई एक हमेशा 1 upon में आएगा, तो उसको आप पहले रैशनलाइज करोगे, फिर आगे के सब्स्टिट्यूशन में जाओगे. आई होप इट्स क्लियर टू यू. तो अब हमें x plus 1 upon x मिल गया. अब हमें क्या करना है, x square plus 1 upon x. तो जनरली आपके दिमाग में, जनरली एज अ स्टूडेंट क्या होगा, अरे बाप रे, इट इज root 3 minus root 2 का स्क्वायर plus root 3 plus root 2 का स्क्वायर. वेरी कॉम्प्लिकेटेड? नो, इट्स वेरी 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 सिंपल. बहुत सी सिंपल है, आसान सी चीज है. देखिए कैसे करना है. मेरा यहाँ पे आंसर क्या आया, तो x plus 1 upon x is equal to 2 root 3. What will I do? Simple. I told you, no, it's maximum of identities. Okay, so squaring both the terms. तो squaring both the terms हो गया तो क्या हो गया, इस तरफ इसका whole square और यहाँ पे इसका whole square. Yeah, somebody is right. Okay, x plus 1 upon x यानी a plus b the whole square. तो a square plus 2ab plus b square is equal to 4 3s are 12. So therefore x square, आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या मिल गया आपको, 2 plus 1 upon x square is equal to 12. And therefore x square
plus 1 upon x square is equal to 12 minus 2. I hope this is clear to all of you. You will go through it. Take your time, but try to understand it. Any doubt तो मुझे please अभी पूछ सकते हैं आप इसके लिए. से थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, शायद अभी समझ में आ जाए, बट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस. जो भी आज का किया है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्लास 9. और जनरली आप PT1 ले लीजिए या PT3 ले लीजिए, आपके फाइनल एग्जाम्स ले लीजिए, तो हर जगह पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा. बच्चा 1/x कैसे होता है? रेसिप्रोकल. x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/. तो दोनों तरफ 1/, लिया तो ये ऊपर आ गया. जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2. दैट्स ऑल. यहाँ तो सिंपली करना है, रेसिप्रोकल ही लेना है. आदित्य, am I clear? Understood? जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2. तो उसी तरीके से 1/x, तो 1/√3 plus √2, so √3 plus √2 upon 1. Is it clear? I hope I'm clear. Aditya, did you understand? I'm waiting. If it is clear, please comment it that you understood this. Every time the denominator will be available. Denominator तो आ ही नहीं रहा है बेटा. वही तो मैंने समझाया अभी. Every time denominator will be 1/x. नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा x plus 1/x या x minus 1/x उस तरीके से पूछेंगे. तो कोई भी एक, या तो आपका x या तो आपका 1/x को आपको रैशनलाइज करना होगा. किसी दो में से एक को रैशनलाइज करना पड़ेगा हमेशा. या तो x को रैशनलाइज करोगे या तो 1/x को रैशनलाइज करोगे. आई होप आई एम क्लियर. Is your doubt clear? Okay. So I expect that you understood today's concept. Now, today you have to practice for the sums. Okay, you first write down the notes. Please, I'm repeatedly saying in the group also. आप एक चीजें बार बार पूछते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो. दूसरी चीज ये हुआ कि जब आपकी सॉल्विंग पे आता है तो आप ये नोट्स कॉपी नहीं कर रहे हो. आई मीन नॉट दिस, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कॉपी दिस, बट जो मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर रही हूँ, ठीक है ना, जो नोट्स मैं आपको लिख के व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज रही हूँ, पहले उसको किसी नोटबुक में या किसी पेपर में कॉपी करिए. मैंने कहा ना, वो नोट्स मेंटेन करना जरूरी है. तो जब आप कॉपी करोगे, जैसे आप बोर्ड पे भी करते हो कि मैं लिखती हूँ तो आप कॉपी करते हो, ओके, तो ये जो नोट्स है उसको आप पहले कॉपी करिए. ओके, उसको गो थ्रू करिए और उसके बाद खुद से सम सॉल्व करना शुरू करिए. क्योंकि मेथड में मिस्टेक होगी तो अल्टीमेटली इट्स प्रेजेंटेशन हाउ यू राइट, इजंट इट? नो डाउट आपको मेंटली यू शुड बी रेडी टू कैलकुलेट, बट अल्टीमेटली इट्स अ रिटर्न एग्जाम, तो जो वहां पे वो टेस्ट होता है कि आपने क्या लिखा है. Fine. So be clear about it. Be focused that you write the notes. Okay. And try to keep some marks for this return work also, so that I think it is just motivation for you कि हाँ भाई मुझे इसको maintain करना है. So please try to maintain it nicely. कोई भी आप स्प्रेडशीट में, मैंने कहा है आपको एक फाइल बनानी है अच्छी सी. ओके, और ये सारी नोट्स मेंटेन करिए. जो भी सम्स में दे रहे हैं उसको भी एक नोटबुक में मेंटेन करिए, या तो फिर फाइल में, शीट में नंबर वाइज प्रॉपरली मेंटेन करिए. आदित्य, फिर यही होता है ना बेटा, यू डोंट गेट द टाइम इन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दो चीजें हम साइमल्टेनियसली करने जाते हैं
तो कुछ मिस हो जाता है, इसीलिए मैं अभी बोर्ड पे लिखने से, अभी जो हो रहा है उसको जल्दी से लिखने के लिए मना कर रही हूँ। ओके, नो डाउट, यू कैन रिपीट द वीडियो, यू कैन वॉच इट। यदि आपको फिर से देखना है तो आपको मुझे मैसेज करके पूछना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू टू सम रीजन आई कांट मेक इट एज पब्लिक, तो मैंने इसको प्राइवेट में डाल के रखा है। सो इफ यू वांट टू वॉच इट अगेन, यू हैव टू आस्क मी इन द ग्रुप, सो आई वुड फॉरवर्ड यू द लिंक, और उसी लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। फाइन, so you can ask me if you need to watch it again, so do watch it, और आप उसको समझिए और प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आई एम एंडिंग अप द सेशन हियर। थैंक यू चिल्ड्रन। कुछ भी डाउट हो देन व्हाट्सएप मी एंड कंप्लीट योर होमवर्क। आई एम गिविंग यू 1 day off, so we'll meet day after tomorrow, but by the time you should complete your sums. Okay, thank you children, have a nice day.